capture. We are learning about president. ठीक है, सिंपल सी बात है. प्रेसिडेंट पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 52 to 78 of part 5 deals with president. What I have to do is just a minute. I will take out amendment 1 of the constitution so that we will have all the articles in front of us to read, right? Now let me take it out. Where should I tear it apart? Just a minute. Oops. So this is all the constitution that needs to be stapled first. Let me we'll go to president, which is where is our president? President is article 52 to article 78. Part 5, article 52 to 78 deals with your union. Part 5 constitution deals with union executive. Okay, union executive, article 52 to article 78. Union executive includes president, vice president, prime minister, council of minister, and attorney general.
सो अटॉर्नी जनरल भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है. तो विल स्टार्ट विद प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. The president is not directly elected by the people but by the members of electoral college. This is important. By the members of electoral. President is elected by the members of electoral college, and the members should be elected, not nominated members. By members of electoral college consisting of electoral college क्या consist करता है वो उसमें है elected members of both houses of parliament. Again, no nominated member. Elected members of legislative assembly of states and elected members of legislative assemblies of union territories. ठीक है, दिल्ली और पौंडीचेरी. कश्मीर भी होता है लेकिन कश्मीर अभी कोई मेंबर ही नहीं है कश्मीर में, इसलिए नहीं है. तो यहाँ पे एक वो बात है कि लेजिस्लेटिव असेंबली है लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो स्टेट्स में होता है वो नहीं है, क्योंकि हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता. तो इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज. दिस इज नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड मेंबर्स बोथ इलेक्टेड नॉमिनेटेड ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. काउंसिल से कोई भी नहीं होगा. Do not participate in election of president. Where an assembly is dissolved, the members cease to be qualified to vote. So अगर कहीं भी assembly dissolve हो रखी है तो उसका हम केस नहीं बना सकते कि assembly dissolve हो गई इसलिए इसका वोट नहीं मिल रहा. वोट ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो जाता है, उनके वोट्स ख़त्म हो जाते हैं. तो members cease to be qualified to vote even if fresh election to be dissolved. Assembly are not held before the president election. ठीक है. Constitution provides that there shall be uniformity in the scale of representation. A different state parity between the state as a whole and union at the number of votes on each elected member of legislative assembly of each state and parliament is enlisted and cast at election shall be determined by the following. अब आते हैं हम सिस्टम को कैसे कितने वोट्स कौन डाल सकता है. Every elected member of legislative assembly shall have vote value of vote of MLA is equal to total population of the state divided by total number of elected members of the state legislative assembly multiplied by 1/1000. So total population state का divided by number of elected members from that state by into 1/1000. ठीक है. इलेक्टेड मेंबर ऑफ वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी क्या होगा. वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी विल बी इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएस इन ऑल स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. सो एक प्रॉब्लम है कि जितने एमपीज के वोट हैं चाहे वो लोकसभा में हो और राज्यसभा में हो वो इक्वल होते हैं. ठीक है. पर हर स्टेट में एमएलएस का वोट डिफरेंट होता है. प्रेसिडेंट हेल्ड अकॉर्डिंग विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग बाय सीक्रेट बैलेट. एक लौता वो है जिसमें वोटिंग बाय सीक्रेट बैलेट अलाउ होता है और शायद वाइस प्रेसिडेंट में होता है, वो बाद में पढ़ेंगे. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल एंड वोटिंग बाय सीक्रेट बैलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. This system ensures the success. अगर कोई डाउट्स और डिस्प्यूट होता है इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है, डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, हुज डिसीजन इज फाइनल. द इलेक्शन
of president cannot be challenged on the ground that electoral college was incomplete. If the person as a president is declared void by the Supreme Court, act done by him, such date of declaration of the court is not invalidated and continue to remain in force. Some member of the Constitution exercise this indirect. कि हम ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों कर रहे हैं, हम सीधे सीधे वोट क्यों नहीं करा लेते प्रेसिडेंट के लिए. इस प्रेसिडेंट के लिए अगर सीधे सीधे हम वोट रखें तो पावर डुअल पावर हो जाएगा. हमारे पास जो पावर है पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है, प्रेसिडेंट के पास नहीं. लेकिन अगर इलेक्शन करेंगे तो प्रेसिडेंट को कुछ पावर देना पड़ेगा और फिर 2 सेंटर्स बन जाएंगे गवर्नमेंट के. तो इसको ख़त्म करने के लिए हमने नॉमिनेट वो प्रोपोर्शनल वोट किया और डायरेक्ट पीपल इलेक्ट नहीं करते. दूसरा है कि ये सिंबॉलिक पद है प्रेसिडेंट का, तो वो इज़ नॉट डायरेक्टली चोजन. उसके लिए उनके पास मतलब एक एक्सटेंसिव पावर नहीं है. उसके लिए पूरा वोटिंग कराना एक तो काफ़ी एक्सटेंसिव है और दूसरा काफ़ी पैसे लगते हैं उसमें. सब में हो जाते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट शुड फुलफिल फॉलोइंग क्राइटेरिया. पहला बात कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, ठीक है. 35 ईयर्स ऑफ एज होने चाहिए. सिटीजन ऑफ इंडिया, कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा. ये राज्यसभा नहीं, लोकसभा का होता है. ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा. ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट under the union government or any state government or any authority. The sitting president or vice president of the union, governor of the state and minister is not deemed to as a whole any officer who has qualified for the president. Okay, तो सिटिंग प्रेसिडेंट भी लड़ सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी लड़ सकते हैं, गवर्नर भी लड़ सकते हैं, मिनिस्टर भी लड़ सकते हैं, क्योंकि इस पोस्ट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाले पोस्ट नहीं मानते हैं. फॉर द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट इन इलेक्शन मस्ट हैव एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स. A nomination of candidate for election office of president must have subscribed at least 50 electors जो कि propose करेंगे और 50 second करेंगे. Every candidate security deposit of 15,000 by RBI and which will be forfeit with 1/6 of vote polled. Before 1997 with an affirmation of parliament they faithfully execute office, protect, defend Constitution and law, and the law, faithfully execute the office, to devote himself to the service of well-being of people. The oath of the office of the president administered by the Chief Justice of India in his absence senior. तो ओथ जो होता है हमारे प्रेसिडेंट का वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिलाते हैं. उसके अगर वो एब्सेंट हैं तो सीनियर वो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो आ सकता है. Any other person acting as a president or discharging function of president also undertakes a similar oath and affirmation. Okay, condition of president office. So president cannot be a member of either house of the is not a member of either house of the parliament, should not be a member of either house of the parliament or house of state legislature. कहीं के member नहीं होने चाहिए. If such person elected as per he deemed to have vacated his seat of the house and date which he enters about office as a president, he should not hold any office of profit. He is entitled without payment rent to use official. He is entitled to have emoluments, allowances and privileges as members of the parliament diminished during his term of office. The parliament increased.
president is has immunity फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी ऑफ ऑफिशियल एक्ट्स में अगर कुछ काम करते हैं प्रेसिडेंट तो उन पे कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, ठीक है। ड्यूरिंग हिज टर्म ही इज इम्यून टू एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, ठीक है। इवन इन रिस्पेक्ट टू पर्सनल एक्ट he cannot be arrested or imprisoned, however after giving 2 month notice civil proceedings can be instituted against him। और सिविल प्रोसीडिंग 2 मंथ के नोटिस के बाद 2 मंथ नोटिस के बाद सिविल प्रोसीडिंग दिया जा सकता है। और रिस्पेक्ट टू हिज पर्सनल एक्ट, तो क्रिमिनल ऑफेंस कोई सा भी नहीं होगा उनके पर्सनल एक्ट पे, मतलब अगर आप वो गाड़ी चला रहे हैं, आप गाड़ी सामने आया मर गए आप, तो उन पर केस नहीं होगा और उनको इम्प्रेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई फ्रॉड वगैरह किया है तो 2 महीने का नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद से उस पर कोई कार्रवाई हो सकती है। Term impeachment and vacancy. The president holds office for the term of 5 years from the date he enters the office. However, he can resign his office by addressing the resignation letter to the vice president। क्योंकि प्रेसिडेंट सबसे बड़ा होता है, वो अपने से बड़े किसको लेगा, तो वो वाइस प्रेसिडेंट को लेटर लिखता है। Can also be removed from the office for completing process in term process of impeachment। तो तीसरा है डेथ। President can hold office beyond his 5 years until his successor assumes it। He also eligible for re-election of the office he may be elected for any number of terms। However, U.S. president cannot be elected more than twice। Impeachment of the president can be removed from the office by the process of impeachment for violation of constitution। यही कहा था कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया, इसके लिए उन पर इम्पीचमेंट हो सकता है। इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द मीनिंग फेस ऑफ वायलेशन ऑफ इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी either house or 1/4 members of the house। इम्पीचमेंट अगर करना है प्रेसिडेंट के साथ किसी हाउस में हो सकता है, ठीक है। साइंड बाई एटलीस्ट 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड 25% मेंबर्स ऑफ द हाउस वो चार्ज फ्रेम करेंगे और 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को। आफ्टर इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास बाय मेजॉरिटी ऑफ 2/3 of total membership of the house, it is sent to the other house which should investigate the charge। The president has the right to appear and to be represented in such investigation। If the other house also sustains charge possess, then the president shall remove the house। impeachment एक impeachment है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, तो पार्लियामेंट क्वासी जुडिशियल फंक्शन करता है, उसका भी एक एग्जांपल हो गया है। इसमें इम्पीचमेंट के प्रोसेस में, जैसे कि इलेक्शन के प्रोसेस में नॉमिनेटेड मेंबर्स इन्वॉल्व नहीं होते थे, लेकिन इम्पीचमेंट के प्रोसेस में नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द आइदर हाउस कैन पार्टिसिपेट, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ असेंबली लेजिस्लेचर होते हैं या फिर नॉमिनेटेड मेंबर वहाँ के, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट ऑन एक्सपायरी ऑफ टेन्योर 5 years बाय रेजिग्नेशन, तीसरा है, और रिमूवल द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, और चौथा है डेथ। और ये सब हो जाता है, अदरवाइज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा तो उनका इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा। मैन वैकेंसी इज गोइंग टू बी कॉस्ट सिटिंग प्रेसिडेंट, द इलेक्शन इज वैकेंसी मस्ट बी हेल्ड इन एक्सप्रेशन ऑफ द केस डिले ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन ऑफ न्यू प्रेसिडेंट इन रीजन द आउटगोइंग प्रेसिडेंट कंटिन्यूज टू constitution ought to prevent interim, then the situation vice president does not get opportunity to act as a president। Vacancy of going expiration of term sitting president election। अगर इलेक्शन नहीं हुआ तो आउटगोइंग प्रेसिडेंट ही होता है, वीपी उसका ऑफिस नहीं भरता। इफ द ऑफिस ऑफ रेजिग्नेशन रिमूवल डेथ अदरवाइज देन इलेक्शन बी हेल्ड विद इन 6 months। office of president resignation removal death। vice president act as a president until the new president further when a sitting president is unable to discharge the function due to absence illness other cause, then the vice president discharges function as office case of the vice president office of vice president। then अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और सीनियर मोस्ट जज office of senior most of the Supreme Court acts as a president discharge of president। so अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं हुए और प्रेसिडेंट रिजाइन कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट हो सब बन जाएंगे तो आपके प्रेसिडेंट। अगर वो भी नहीं रहे तो कोई सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उनके बाद वाला वो बन जाएगा प्रेसिडेंट। when any person vice president chief justice of India or any senior most judge of the Supreme Court is
acting as a president, discharge of function of president, all the powers and function of the president. Power enjoyed president can be studied: executive power, legislative power, financial power, judicial power, diplomatic power, military power, and emergency powers. The executive power or function of the president, all the executive action of the government are formally taken under his name. ठीक है. पावर ऑफ प्रेसिडेंट 4 चीज़ हम डिवाइड कर सकते हैं, 4 नहीं 7 कर सकते हैं: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इमरजेंसी की पावर होती है. पावर ऑफ प्रेसिडेंट, सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन जो होते हैं गवर्नमेंट के वो प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं. सारे जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन हैं सारे प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं. दिस इज पावर ऑफ प्रेसिडेंट. All of executive government decisions are formally taken under his name. ठीक है. ही कि मेरे उस पर मैंने rules for convenient transaction of business of union government for the question of business among them. He can appoint prime minister, appoints prime minister and other minister. They hold office during his pleasure. ये लिखा हुआ है कि they hold office during their pleasure, but ये पूरी तरह मतलब इसका लिटरल मीनिंग ये नहीं है. वो ऐसे हटा नहीं सकते, उनको एक रिकमेंडेशन चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कि हम हटाया रहे तभी हटाया जा सकते हैं, या फिर प्राइम मिनिस्टर करें कि किसी मिनिस्टर को हटा दो तो हटा सकते हो. ये अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया, अपॉइंटेड बाई अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल, डिफाइंस हिज रिकमेंडेशन. अटॉर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. ये प्लेजर ऑफ द अटॉर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. He appoints CAG of India, CAG, election commissioner, other election commissioners, chairperson of UPSC, governor of state, chairman and member of financial commission, and so on. बहुत सारी होती है. You can seek any information administration of affairs of the union, proposal for legislation for the prime minister. He requires prime minister to submit, consider council of ministers any matter on which decision have been taken by the minister, but which has not been considered as a council. He can appoint a commission to investigate the condition of SC, ST, and appoint commission. President can appoint commission to go look into conditions of SC, ST, and other backward castes. He can appoint interstate council and promote center-state and interstate cooperation. Interstate council को कभी appointment ये president ही करते हैं. He is directly administers UT through the administrator appointed by him. He can declare any area as scheduled area, and has power with respect to administration of scheduled areas and tribal areas. तो किसी भी एरिया को scheduled area बता सकते हैं और उनके पास पावर भी है उसको एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे scheduled एरिया और ट्राइबल एरिया के लिए. अब आते हैं लेजिस्लेटिव पावर के लिए. प्रेसिडेंट क्या होते हैं? समन करते हैं, प्रोरोग करते हैं पार्लियामेंट को, डिसॉल्व करते हैं लोकसभा को. ही समन्स द जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट द फर्स्ट कमेंसमेंट, फर्स्ट सेशन. पार्लियामेंट के कमेंसमेंट फर्स्ट सेशन में वो बोलते हैं आफ्टर जनरल इलेक्शन और फर्स्ट सेशन एवरी ईयर. ही सेंड्स द मैसेज ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू बिल. ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ लोक सभा टू प्रोसाइड ओवर हिज proceedings. He nominates 12 members of the Rajya Sabha, which special knowledge of practice. Nomination of 12 members of Rajya Sabha भी president के हाथ में होता है. He decides the question of disqualification of member of parliament consultation with the किसी member of parliament को disqualify करना है तो वो consultation of election commission से वो करेंगे. His prior recommendation permission needed to introduce certain type of bill of parliament, for example bill involving expenditure from the consolidated fund of India or bill alteration of boundaries. When bill is sent to the president, it is passed the parliament. He can give his assent, withhold assent and return the bill. So कोई भी बिल है उसको हम भेजते हैं तो या तो अपना एसेंट दे सकते हैं, साइन कर सकते हैं, या फिर अपना कंसेंट विथहेल्ड कर सकते हैं, या फिर बिल को रिटर्न कर सकते हैं. विथहेल्ड करने का एसेंट का मतलब है कि वो अपने पास बिल को रख सकते हैं.
लेकिन अगर बिल पास कर दिया with or without amendment, then president have to give the assent of the bill, and the bill is passed to the state legislature, which is by governor. दूसरा कि अगर स्टेट में मान लो गवर्नर रखता है बिल प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट उसको असेंड दे सकते हैं, उसको विथहेल्ड कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं गवर्नर को कि वो स्टेट लेजिस्लेचर में दे दे। लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर दोबारा पास करके भेजता है तो प्रेसिडेंट के पास कोई कंपल्जन नहीं है कि वो बिल साइन करें। दूसरा है, he can promulgate ordinances when the session is not in parliament is not in session, ठीक है। These ordinances must be approved by the parliament within the 6 weeks from reassembly. He can also withdraw ordinance at any time. 6 weeks यानी 1.5 महीने के अंदर, 6 weeks 6 month। कैग की रिपोर्ट लिख सकते हैं, यूपीएससी कमीशन की, फाइनेंस कमीशन की, पार्लियामेंट के अंदर।